हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का प्रोफेसर की पाठशाला में स्वागत है। इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग की लेक्चर सीरीज में आज हम सेकंड लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। Right. So we have a source, we have a communication link through which the information will be transmitted, and we have a receiver which will receive the information. Let's say the source is X and it is generating m different symbols like x1, x2, x3 up to x of m. We have a receiver which is y. It is also receiving n different symbols like y1, y2, y3. So we have multiple sources, and this is up to yn. m is not necessarily equals to n. जरूरी नहीं है कि m और n की वैल्यू सेम हो, पर यह भी जरूरी नहीं है कि सेम ना हो. So it can be equals to n as well. ठीक है? They both are independent. Hx is what? It has defined some basic definition. Like Hx is, H means this is the entropy, X means source. So this is the entropy or uncertainty of the source. Hy is the uncertainty of the receiver. Of X given Y is the entropy or uncertainty of X, right? This has to deal with X and Y both, but this is the entropy of the X when Y is given. So if the event Y has already been occurred, then the entropy will be calculated, and that entropy will be named as H of X given Y, H of Y given X. That means this is the entropy of Y. This is the entropy of Y when X has already been occurred. So when X is given and then we calculate the entropy of Y, that entropy will be named as H of Y given X. Okay. This is the joint entropy of X and Y. So this is the uncertainty or entropy of X and Y as a whole. So these are the basic definitions of entropy for the two different sources. We have one source X and we have a receiver Y, and these are the joint definitions of X and Y. So generally we know Hx is the greater than equals to Hx given Y. This you know, ये आपको पता है. हमने last class में इसको डिस्कस किया था. When X and Y both are independent, then H of X given Y will be nothing but equals to H of X. So these two events will be equal only when X and Y both are independent. When X and Y are not independent, when they are dependent, then Hx is always either greater than or equals to Hx given Y. And the same way we can see Hy is greater than or equals to Hy given X. Hy given X will be equals to Hy only when X and Y both are independent. Now we'll see the information communicated by the link from the transmitter to the receiver. What is the amount of information that is being communicated by the channel from the transmitter side to the receiver side? And this is defined as Hxy equals to Hx minus Hx given Y. We may also define it as Hy minus of Hy given X. See, we have received the signal at the receiver side and we are naming it as Y. So uncertainty of Y is Hy, and the information which is communicated by the channel is Hy minus Hy given X. That means, let's say, समझें थोड़ा सा. Let's say X and Y both are independent. Okay. So when both are independent, what is the value of Hy given X? Y given X is nothing but equals to Hy, right? So if X and Y both are independent, Hy given X is nothing but equals to Hy. Hence, Hy minus Hy equals to 0. This says the information communicated by the channel is 0. It means if Y has nothing to deal with the X, so whatever may be the value which is being generated and transmitted from the transmitter side, we have nothing to deal with
the value of x, we can generate the signal at the receiver side only. हम hy को रिसीवर साइड पर ही जनरेट कर सकते हैं अगर उसको x से कोई लेना देना ही नहीं है. जब ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, y जब x से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, तो क्या आपको उसको ट्रांसमिट करने की जरूरत है? ट्रांसमीटर से जनरेट करके ट्रांसमीटर से आप उसको चैनल की मदद से ट्रांसमिट करेंगे, वेस्ट ऑफ टाइम. आप y को रैंडमली जनरेट करिए रिसीवर साइड पर, और वो वैल्यू आप कह सकते हैं कि हाँ दिस इज द वैल्यू विच इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द ट्रांसमीटर, क्योंकि x की वैल्यू से हमको लेना देना ही नहीं है. You got my point. So information which is being conveyed from the transmitter side with the help of channel is given by this formula. और ये formula क्या है? hy minus hy given x. Got it? hy means uncertainty at the receiver side minus hy given x, uncertainty at the receiver side when x has already been occurred, when x has been transmitted. So दोनों uncertainties का हम difference निकालेंगे, and that difference is known as the information which is being conveyed by the channel, by the link. Got it? Let's say the information of the event is xi is given as ixi, which is minus of log pxi. ये हम formula last session में भी देख चुके हैं. So information after observing the yj is minus of log probability of xi given yj. See, observing the yj मतलब yj has already been occurred. So when yj has already been occurred, then the information of the event will be given as minus of log probability of xi given yj, since yj has already been occurred. Hence, this will be a conditional probability. So the information gain is what? This is the information gain. I of xi yj by definition is log of the conditional probability divided by individual probability. Information gain. Information after observing this value ixi minus of this value. Information after observing the yj. So this value minus this value is what? Log of probability of xi given yj divided by probability of xi. This is the information gain. जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली है उस इन्फॉर्मेशन की वैल्यू है ये, ठीक है. और इसको हम बोलते हैं जॉइंट इन्फॉर्मेशन आई ऑफ एक्स आई कॉमा वाई जे. म्यूचुअल और एवरेज इन्फॉर्मेशन, म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन और एवरेज इन्फॉर्मेशन जो डेफिनेशन हम अब नेक्स्ट देखने वाले हैं, दैट इज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन. Definition is like this. The mutual information is I of x y is the average value. Average means the expectation. Operator आपको apply करना पड़ेगा. So expectation of I xi comma yj. This is the variable. So I of xi yj, जब इसकी average value निकालनी है आपको, you will apply an expectation operator. By this you will get the average information. The formula for this is, see, expectation operator आपने apply किया है. So expectation of I I of xi yj is this log of p of xi yj divided by pxi, multiplying with the probability of the event. Entropy का मतलब क्या होता है? Sorry, expectation of x means probability of x multiplying with PDF of x, and we'll integrate it for minus infinite to plus infinite. So this is what? This is the probability of f, probability of x multiplying with the PDF of x. And we'll integrate it for all the values. So we'll integrate it for all the values of I and j. I will be equals to 1 to m, j will be equals to 1 to n, and we are integrating this. Then the formula which we'll observe is the mutual information or average information, like I, x, y. So this formula is, mutual information formula is ixy equals to hx minus of hx given y. पहले भी देख चुके हैं हम इसको. Or else we can write it like hy minus hy given x. ठीक है? This is the information which is being communicated by the link from the transmitter to the receiver. Okay, this can also be rewritten as hx plus hy minus joint entropy of x and y. So hx plus hy minus hx comma y is nothing but equals to I of
y comma x. That means the information which is being communicated by the channel from the x to y is same as the information which is being communicated by the channel, same channel, from the y to x. X to y will be same as y to x. Same information transmit की जाएगी from the source to destination or from the destination to source. We have a table here. Is the table of the joint probabilities of two events x and y. So x1 y1 has a joint probability is 1 by 8. x2 y1 has a joint probability of 1 by 16. x3 y1 1 by 32. x4 y1 is 1 by 32. Same way we have x1 y2, x2 y2, x3 y2, x4 y2. This is how we can populate a table. These are the joint probabilities of the event, two events x and y. Okay. Now we need to find the probability of y1 from this. Probability of y1 from the joint probability. आपको याद होगा फॉर्मूला हम लोग क्या करते थे कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर. If we are given with a joint PDF and we need to find the marginal PDFs, is we are going to integrate. If we need to find out the probability of y1, we need to integrate the joint probability with respect to another variable which is x. So x के लिए जब integrate करेंगे, that means we are taking all the values of x. That means we are going to take the values of x1, x2, x3 and x4. So when we add it, but we are keeping y1 same, we'll get the probability y1. So when we add it 1 by 32 plus 1 by 32 will be 1 by 16. 1 by 16 plus 1 by 16 is 1 by 8, and 1 by 8 plus 1 by 8 is 1 by 4. So this is how you'll get the probability of y1. Okay. What I'm expecting from you is please try calculating the values of probability of y2, y3, y4. Same way the probability of x1, x2, x3 and x4. Please आप उसको प्लीज क्रॉस चेक कर लीजिए. आपके जो आंसर आए हैं py1 is 1 by 4, y2 is 1 by 4, y3 and y4 1 by 4, x1 is 1 by 2, probability of x2 is 1 by 4. We'll add this to get the probability of x2. x3 is 1 by 8 and x4 is 1 by 8. So these are the respective values of the individual probabilities from the joint probabilities. Okay, please note it down. These are the values of x, these are the values of y. तो hx calculate करेंगे with these values, hy calculate करेंगे with these values. आंसर हमारे हैं hx is 7 by 4, hy is 2, hx given y is 11 by 8, hy given x is 3 by 8, information is 3 by 8. These are the answer. चेक कर लीजिएगा आपके आंसर आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, तो जिनके नहीं आ रहे हैं वो नोट कर सकते हैं और कोशिश करें आगे निकालने के लिए. ओके. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो जो इस वक्त हमको ध्यान रखना है वो क्या है, इन्फॉर्मेशन, म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन, जिसका फॉर्मूला आप यूज किया होगा आपने. वो फॉर्मूला क्या है? यू मे टेक इट either as hx minus of hx given y, or you may take it as either hy minus of hy given x. This is the information which is being communicated by the link hx minus hx given y or hy minus hy given x. So दोनों जगह अल्टीमेटली बात हम इंफॉर्मेशन की कर रहे हैं, i of x y. Right. Let's see. In general, the value of entropy of x given y is necessarily not equals to hy given x. That means the entropy of x when y is given will be different than the entropy of y when x is given. ये दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है जनरली, कोइंसिडेंटली सेम भी हो सकती है, जनरली अलग अलग होती है. राइट. और सी दिस इंफॉर्मेशन ixy फॉर्मूला क्या था ixy के लिए? ixy के लिए फॉर्मूला क्या था? hx minus hx given y. बट इफ इट इज ixx इंफॉर्मेशन ixx, इसकी वैल्यू क्या होगी? hx minus of hx given x. Right. In place of y I have replaced x. So this value is nothing but equals to hx. Why? Because uncertainty of x when x is already being given to you. जब आपको x के बारे में पता है तो अब x के अंदर कोई uncertainty बची नहीं है. So hx given x is 0. There is no uncertainty left. So x given x, uncertainty of x given x is what? It is 0, because
x has already been occurred, जब x आपको पता है, उसके बाद जो x है उसके अंदर कोई अनसर्टेनिटी नहीं बची हुई है, x के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है, तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी, उसकी अनसर्टेनिटी क्या होगी, दैट विल बी जीरो. सो व्हेन इट इज जीरो, ix इज नथिंग बट द अनसर्टेनिटी ऑफ x ओनली. दिस इज द अनसर्टेनिटी ऑफ x ओनली. x को ट्रांसमिट किया गया, x को रिसीव किया गया, तो जो कम्युनिकेशन है, जो लिंक से कम्युनिकेशन किया गया है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन क्या पास हुई है, दैट इन्फॉर्मेशन इज द एंट्रोपी ऑफ x. इसमें हम माइनस कर देते थे, इसमें माइनस कर देते थे क्या, एंट्रोपी ऑफ x गिवन y. अगर दो अलग अलग मतलब x को ट्रांसमिट किया गया, y को रिसीव किया गया, सो वी मे राइट इट लाइक hy माइनस ऑफ hy गिवन x. y को जो ट्रांसमिट किया गया उसकी एंट्रोपी, और y x के अगर होने के बाद y जो बचा हुआ है उसकी एंट्रोपी, उसको माइनस कर दिया करते थे. बट सिंस हियर वी आर ट्रांसमिटिंग x, वी आर रिसीविंग x, therefore it is hx minus hx given x, and this value is 0. so लिंक से जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट की गई है, दैट इंफॉर्मेशन इज इक्वल्स टू द एंट्रोपी ऑफ x. राइट, इसको हम विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम. दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स द अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट x, whereas this represents the uncertainty of event y. Since we have something in common, और जो common part है, that is the information x, y. ठीक है, this is basically the information which is given like this. So definition of I of x, y जो आपने देखी है वो क्या है, information of x, y जो हमने देखा है वो क्या है, hx. इस कंप्लीट सर्कल में से, hx में से मैं इस पार्ट को हटा देता हूँ, ये पार्ट क्या है, hx given y. sorry, this is the entropy of x. This value is the entropy of x when you know everything about y. So when y has already been occurred, जो बाकी का बचा हुआ है उसकी एंट्रोपी कैलकुलेट करना is hx given y. So this is this common part is given as information of x and y as a whole. और ये फॉर्मूला कैसे आता है, this formula comes as hx minus of hx given y. Same way, this whole is the entropy of y, और इसमें से आप इस पार्ट को माइनस कर दें जो कि क्या है, h of y given x. So when you subtract hy with hy given x, the resultant is the mutual information I of x, y. This is the mutual information which may be written as hx minus hx given y, or hy minus hy given x. Okay. Another case when we have x and y both as independent quantity. So when they both are independent, these two does not have anything in common. Therefore, the information part communicated from the source to destination is 0. ixy. मैंने देखा था, मैंने बताया था आपको, hy minus of hy given x. Now, since x and y both are independent, hy given x is equals to hy. तो क्या बचेगा, hy minus hy. Therefore, it is equals to 0. So, no information is communicated. तो information communicate ही नहीं की गई है. x का जब y से कोई लेना देना नहीं है, तो y को आप रिसीवर साइड पर जनरेट कर लो ना, ट्रांसमीटर से सेंड करने की जरूरत क्या है. दिस इज हाउ we can visualize the information part when a transmitter is transmitting a symbol x and a receiver is receiving. General notation is y. Communication channel से जो information पास हुई है, उस information के बारे में knowledge हमको लेनी है, and that information is represented as I of x, y. Got it? आगे चलते हैं. Okay, there is a chain rule, और उसको आप समझिए, ये chain rule important rule है. एंट्रोपी का रूल है ये चेन रूल, प्रोबेबिलिटी का भी यही रूल होता है, सेम रूल है. अगर आपने पढ़ा है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है तो आज देख सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी में भी अप्लाई होता है. ओके, द रूल सेज द जॉइंट एंट्रोपी ऑफ x एंड y एज अ होल इज गिवन एज hx plus h of y given x. The joint entropy, it says the joint entropy of x and y as a whole can be written as the addition of the entropy of x with the entropy of y given x. This is a chain rule, and this can be applied for more than two variables, like this: h of x1, x2, x3. इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको लिखेंगे हम h of x1, पहला वेरिएबल लिया मैंने, h of x1 प्लस h of सेकेंड वेरिएबल x2,
comma x3 given x1. So this is h of x2 comma x3 given x1. Got it? Now इसको भी हम उसके बाद सेपरेट कर सकते हैं, और उसको सेपरेट करने का तरीका क्या है, ये आप ऊपर वाले फॉर्मूले से अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है? सो दिस इज योर चेन रूल. दिस इज योर चेन रूल. सी दिस. सेपरेट करने का तरीका क्या है? h of x1 will come as it is. h of x2 comma x3 given x1 can be written as h of, ऊपर वाले फॉर्मूले से देखेंगे, h of पहला वेरिएबल लिया x2 given x1 एंड देन प्लस दूसरा वेरिएबल h of x3 given x2 x1, h of x3 given x2 x1 और x1 x2. सो दिस इज हाउ हम चेन रूल को समझ पाते हैं. ये चेन रूल है, ये चेन रूल प्रोबेबिलिटी में भी अप्लाई होता है. ये चेन रूल मोर देन वन वेरिएबल्स के लिए अप्लाई किया जाता है. एंड दिस इज द जॉइंट एंट्रोपी ऑफ मोर देन वन वेरिएबल इज गिवन एज द इंडिविजुअल एंट्रोपीज के टर्म्स में लिखते हैं उसको. सो h of x1, x2, x3 कैन बी रिटन एज h of x1 प्लस h of x2 by x1 और x2 given x1 plus h of x3 given x1 x2. Right. Next is a relative entropy, which is the measure of distance between the two entropies. There is a formula. You can mug it up. You can see this. This says the distance d is the distance between two entropies. This is the distance between p and q. The formula is given as summation of px log px given qx, or px divided by qx. So it is basically a formula which is given like this, where px and qx is the distance between the two probabilities. So distance between two probabilities is given as d p parallel q. Right? Channel capacity. What is the channel capacity? The formula is, the channel capacity is the maximum amount of the information which is being communicated by a communication link. चैनल की कैपेसिटी क्या होगी? चैनल की कैपेसिटी वो होगी जो चैनल जितनी इंफॉर्मेशन पास करता है फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन. सो द फॉर्मूला इज गिवन एज द चैनल कैपेसिटी C is equals to the maximum amount of information which is being passed from the source to destination. This is the channel capacity. IXI is nothing but the mutual information, जिसके बारे में हम डेफिनेशन पहले भी देख चुके हैं. ठीक है? This is the channel capacity. ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. अब हम बात करेंगे बाइनरी सिमेट्रिक चैनल के बारे में. तो बाइनरी सिमेट्रिक चैनल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है. बाइनरी सिमेट्रिक चैनल, ठीक है, वी हैव a symbol 1 0 at the transmitter side. We have a symbol 1 at the transmitter side. So we have two symbols at the transmitter side, 0 and 1. We are transmitting 0 from the transmitter side and we are receiving 0 at the receiver side with the probability of q. So q probability के साथ एक symbol 0 है जो कि ट्रांसमिट किया गया ट्रांसमीटर साइड से और रिसीव किया गया है 0 at the receiver side. Okay, then let's say a symbol same symbol 0 is transmitted from the transmitter side but received 1 at the receiver side. ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी है p. So we are transmitting a symbol 0 at the transmitter side, receiving 1 at the receiver side with the probability p. Same way, 1 is transmitted, 1 is received with the probability q. 1 is transmitted, 0 is received with the probability p. This is how we define a binary symmetric channel. Probability of 0 when 0 is transmitted. This is at the receiver side. ठीक है ना? ऊपर वाला जो लिखा हुआ है ये y side है, receiver side है. नीचे वाला है transmitter side. X generally y is receiver side, x is transmitter side. ऊपर जो लिखते हैं वो हम लिखते हैं receiver side का, नीचे जो लिखते हैं वो लिखते हैं transmitter side का. So 0 is received when 0 is transmitted. 0 is received when 0 is transmitted. What is the probability? Probability is q. Same probability कब आएगी? When 1 is received and 1 is transmitted. So when 1 is received, 1 is transmitted, same probability I'll get. The probability is q. Yeah. 1 is received when 0 is transmitted. Probability is p. 1 is received. 0 is transmitted. Probability is p. Same probability कब आएगी? When 0 is received and 1 is transmitted. When 0 is received and 1 is transmitted. Got it? This is known as binary symmetric channel. Why? Because आप इसको ना एक आप कोशिश करें अपने एंड पे, you make a matrix 2 by 2 matrix, joint entropy matrix. यहां आप लेंगे y, यहां आप लेंगे x,
we have two values of x 0 and 1, we have two values of y 0 and 1. So when you make it, आपका जो channel आएगा, जो matrix आएगा, that matrix will be symmetrical in nature. You will see py 0 given 0, 0 given 0, probability is what? It is q. 1 given 1, probability is what? Q. 1 given 0, probability is p, and 1 given 1, probability is p. So since it is a symmetric channel, since we have only two symbols, transmitter side 1 and 0, so since it is 2, we are using a term binary. Since this is a symmetric channel, because the probabilities are same, the transmitting probabilities are same, therefore this channel is known as the binary symmetric channel. You got it? ठीक है? Okay, so let's say, आगे बढ़ते हैं, let's say we consider a probability of generation of x equals to 0 equals to alpha, and let's say we are taking a probability of x equals to 1, generation of x equals to 1 from the transmitter side, the probability is taken as 1 minus alpha, है ना? दो सिंबल के जनरेट होने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो सकती है, तो 0 जो जनरेट हो रहा है दैट इज जनरेटिंग विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा, और 1 जो होगा वो 1 माइनस अल्फा के हिसाब से जनरेट होगा, करेक्ट ना? एंट्रोपी ऑफ द सोर्स क्या होगा, दैट यू विल टेल मी. एंट्रोपी ऑफ द सोर्स hx, व्हाट? Summation of p log 1 by p equals to, since we have only two symbols, so there will be only two probabilities, p1 and p2. So we can expand this formula as p1 log 1 by p1 plus p2 log 1 by p2, and the probabilities of p1 and p2 are respectively alpha and 1 minus alpha, right? So this is what the entropy of the source, alpha log 1 by alpha plus 1 minus alpha log 1 minus log 1 by 1 minus alpha. What is the entropy of the channel? Entropy of the channel, this is different than the entropy of the source, क्योंकि चैनल्स की प्रोबेबिलिटीज अलग हैं. अभी आपको मैंने चैनल मैट्रिक्स बना के बताया था, उसकी प्रोबेबिलिटीज अलग हैं p एंड q, जबकि सोर्स की प्रोबेबिलिटीज अलग हैं. सो द नेक्स्ट टास्क इज टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, द एंट्रोपी ऑफ द चैनल, एंट्रोपी ऑफ y given x. फॉर दिस वी नीड टू नो द प्रोबेबिलिटीज ऑफ y given x. सी y given x फॉर्मूला आपको पता है कंडीशनल एंट्रोपी का, हम फॉर्मूला लास्ट क्लास में देख चुके हैं. And the formula is probability, joint probability of xi given yj, xi yj, which is the joint probability, log of probability of yj given xi. This is the conditional probability. The second one is the conditional probability. First one is the joint probability. हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और सम करेंगे for all the values of I and j. This is the formula, right? What is the value of probability of yj given xi? Since it is a joint, since it is a conditional probability, the definition of this will be p of xi given yj, which is the joint probability given divided by probability of xi. The joint probability can be rewritten as, आप देखें इसको, the joint probability, this is the joint probability, it can be rewritten as probability of chain rule से, थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा था chain rule. With the help of chain rule, what you can write is probability of xi, x1 x2, या y को x1 मान लो, इसको x2 मान लो. So this is what? This is probability of x1 multiplying with the probability of x2 given x1, p of yj multiplying with probability of xi given yj, xi given yj. So this is what we can write about pxi given yj divided by pxi. ठीक है? hy given x is what? आप समेशन को ओपन करना है, समेशन को ओपन करना है हमको. समेशन को ओपन करेंगे तो i की वैल्यू 1 लेंगे, j की वैल्यू 1 लेंगे, so you will get probability of x1 y1 log of probability of y1 given x1. I की वैल्यू 1 लेंगे, j की वैल्यू 2 लेंगे, x1 y2 log of y2 given x1. I की वैल्यू 2 लेंगे, j की वैल्यू 1 लेंगे, तो आएगा x2 y1 probability of y1 given x2. I और j दोनों की वैल्यू 2 2 लेंगे, y2 x2 y2 given x2. And then we will place the values respectively. The probability of, see, probability of y1 given x1, y1 given x1 is what? Q. y2 given x1 is p, y1 given x2 is p, and y2 given x2 is again q. And to get the joint probabilities, p of x1 y1, joint probabilities को कैसे निकालेंगे? अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा था हमने, p of y1 multiplying with p of y1 given x1, या p of x1 multiplying with p of x1 given p of y1 given x1. So p of x1 is alpha, और x1 के जनरेट होने की प्रोबेबिलिटी,
क्योंकि x1 है ना, सो x1 के जनरेट होने की प्रोबेबिलिटी अल्फा, एंड p ऑफ y1 गिवन x1 इज q. सेम वे p ऑफ x1 के जनरेट होने की प्रोबेबिलिटी अल्फा, एंड p ऑफ y2 गिवन x1 इज p. देन x2 के जनरेट होने की प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, 1 माइनस अल्फा. राइट, x2 के जनरेट होने की प्रोबेबिलिटी इज p of x2 which is what, 1 minus alpha, and p of y1 given x2, p of y1 is given x2 is p. Last, p of x2 के जनरेट होने की प्रोबेबिलिटी 1 minus alpha, and p of y2 given x2 is q. तो अब इसको सॉल्व करना है आपको, ये इक्वेशन जो है इसको सॉल्व करना है आपको, एंड दैट इक्वेशन इज, आप क्या करेंगे, log q को कॉमन लीजिए. यहाँ से log q कहाँ पर है, log q is here, then log q is here. आप कॉमन लेंगे, you will get q अल्फा प्लस q माइनस q अल्फा, और p को log p को कॉमन लीजिए. when you take log p common, this is p अल्फा, and then this is log p अल्फा माइनस, हाँ ये अल्फा नहीं होना चाहिए, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं होना चाहिए. सो जब ये नहीं होगा तो log p कॉमन लेंगे, दिस इज p अल्फा and this is plus p minus p alpha. I hope we are done up to this. हाँ, so last में जो मेरे पास फॉर्मूला आएगा, that formula will be minus of q log q plus p log p. You try, what is the value of ixy? This is hy minus hy by x. So hy की वैल्यू आपको पता है, उसमें से आप hy minus x कर दीजिए. Information will be hy plus p log p. hy by x की वैल्यू रख देंगे हम, p log p plus q log q. सो आज के लिए बस इतना ही. इसके आगे के की पॉइंट समझने के लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में. टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड एंजॉय द इलेक्ट्रॉनिक्स इन प्रोफेसर की पाठशाला. थैंक यू सो मच. डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू स्टडी more concepts and more insights about the electronics. Thank you so much for joining with me.